ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वैक्सीन लगनी है कि सबको इम्यूनिटी मिले और फाइट करने के लिए अच्छा हो आगे जाके। मैं सबको यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। यंग इंडिया कहा जाता है हमारे देश को, ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग हैं, ऐसे में उनका वैक्सीनेशन होना ये कितना ज़रूरी है ऐसा आपको लगता है? देखिए, अभी मैं पर्सनली 27 का हूँ, ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप है, एज ग्रुप, इसमें काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी है जिनका बिजनेसेस आज बंद है। तो मैं ये दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि अगर सब लोगों का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाता है, सो गवर्नमेंट हम उनको ये बोल सकते हैं कि नाउ यू आर मतलब आप अभी आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उसमें जो आम आदमी को 18+ को ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो सब चीज़ें। तो मतलब वही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति मतलब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि मेरा जितना सर्कल है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो सभी उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। और सभी का कहना यही होता है कि वैक्सीन लेने के बाद जो कोई भी प्रोटोकॉल है, जैसे कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, थोड़ी सी जो तकलीफ होती है, एवरीबडी इज रेडी टू बेयर दैट। नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन आज क्या तुरंत करने वाला हूँ। हमारा पूरा सर्कल बहुत एक्साइटेड है, सिर्फ मैं नहीं, बाकी भी। एक्चुअली मीडिया में बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए इस मुश्किल घड़ी में अपन ने पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। और पॉजिटिवली मैं सारे यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए भारी मात्रा में, और जल्द से जल्द वैक्सीन लेना चाहिए। मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे यहाँ भी लोग आते हैं और मुझे भी बाहर जाना ही पड़ता है। मेरे मम्मी पापा भी है घर में, तो सब काम रहता है बाहर का, वो करना ही पड़ता है। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ और एक्साइटेड हूँ। मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। Like I was waiting for a long time that even mostly the youth person only getting infected at this second wave. Right. So it will be so happy to listen that they are giving to vaccine to youth people. So like 18+. So by sure I'll going to first May at the hospital and I'll take my vaccine first. Right. So first dose. Okay. What do you think people who are getting infected the most? Yeah, like nowadays youth people are so infecting, right? अभी नाइट लॉकडाउन लगा है, कैन आई टॉक इन? सो नाइट लॉकडाउन लगा है, यूथ जो है ना ज़्यादातर बाहर आते हैं। अब यू कैन सी इन पार्ट द मोस्टली यूथ पीपल ओनली आर कमिंग एंड जस्ट चिलिंग आउट। सो इट्स ए गुड जो करे ना, जो बहुत अच्छा बात है कि लाइक 18+ मेंबर्स को जो वैक्सीन लगा रहे हैं। सो अभी जो बहुत लोग जो है लाइक दे यूथ पीपल ही ज़्यादा वर्क करते हैं, लाइक सो उनको वैक्सीन लगा रहे, जो अच्छा वे इट कैन बी कंट्रोल लिटिल बिट। क्या है अभी ऐसा इधर पीपल आर सेइंग अभी लॉकडाउन भी है, तो इट माइट बी डिक्रीज आवर केसेस। I feel the time which has been given, like it's been fixed time. Like the problem is while distributing there might be certain like crowd gathering అవ్వచ్చు, crowd gathering అవ్వచ్చు, దానివల్ల ఉన్నదే ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు. There can be more, the corona could spread much more than usual. Plus distribution actually is best to start when they have really huge amount of vaccines. So now they have initiated the inoculation process. I mean the inoculation process for the youth will be initiated from 1st of May. So what is your opinion on this, and how are you feeling about it? Yeah, actually I am really looking forward to taking the vaccine. Right. It's just that I feel the time might not be sufficient just to give the it might not suffice the population, but I'm looking forward to take it. Yeah, I'm eagerly waiting for that. Why? Because most of these the second wave, the very mostly the patient cases are coming. Right. So I'm waiting for that. Why? Because most of the youth wanted to take this, because they are running, roaming, right, all the time, day and or nights. So we have to must take initiative with this. Is good that the government has introduced it right now, or what do you feel about it? Yeah, it's very good. I think it's a very good right time to initiate, because now it's increasing the cases. Right. So we have to take a
much chance to on this time. So, will you get yourself inoculated? Yeah, sure, definitely. I'm waiting for that only. Right. But because we have to take our responsibility to take vaccine. Yeah, mainly today because of COVID-19, even youth are affecting a lot. So it's a good initiative by the government that above 18 years to take vaccination. So I believe that youth are the future of the society. So hence, if we provide vaccination to these, then we can have immunity towards COVID-19. Right. Yeah, it's very important move, and we are waiting for this. ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। So, as per my views, vaccination is one of the most important vital part in preventing COVID-19, and there are many cases where even though the people after vaccination gets positive, it's 0.04% of what the people gets vaccinated, and I strongly believe that it keeps the person protective. Personally, as per my experiences, getting to vaccination of both the doses keeps always the person safe. And one more thing, the vaccination not only keeps the person safe, but also we have to follow the COVID-19 basic protocols. That's the use of mask and sanitizers. It's one of the vital part of keeping a person healthy, and as well as the hygiene. It's important for the human race to keep moving. Way which we can protect or we can prevent COVID-19 as the registration for 18 plus is starting today. There are so many problems regarding the website, but our government is trying to solve the problems regarding the website and registration problems. One thing I want to say is the person above 18 plus should follow the registration process and the time slots, because we know that we have shortage in vaccines. So if we don't follow the time slots and registration time, it will create a huge problem, because nowadays we face vaccination shortage shortage in all over the India. So the thing I want to say is the 18 plus, the youngsters should follow the rules and regulations and formalities of the government about COVID-19 and vaccination process. Do you think it will roll out when it comes to the youngsters? I think so, because the 18 plus or the youngsters are really aware about the situation in our country. So I think so that. Sir, it's a fantastic initiative actually. It should have been done earlier itself. The thing is, then we would have not faced these extremities. So I think I have already registered for this vaccination drive, and we are looking forward for the vaccination. That is the only option we have left now. There is no other options at all. And people also, they were a bit careless earlier of wearing masks or social distancing and sanitizing and all. Now the extremity have been felt by the people. Now people are also eagerly waiting for the vaccination drive. I think the majority of the population was, as we know that India is the youngest country in the world, so they should have given it earlier itself. And I feel this is the first initially they would have given, we would have not faced this much of number of COVID cases in the country, sir. ABP Sonja, Josh Jazba, Junoo.